Good evening. I am Sonia Kulkarni, CEO of IPGA, and it gives me a great pleasure to welcome all of you on behalf of India Pulses and Grains Association. And here's wishing everyone a very happy, healthy, and safe 2022. We've received an overwhelming response for our last two seasons of the IPGA Knowledge Series, and we are happy to bring the third season to you with our very first webinar. Without much ado, I would like to introduce our moderator for the day today, Mr. Mrityunjay Jha. He's a very well-known face in the commodity world, commodity editor and anchor Z Business. I'm sure all of us have watched his live program on a daily basis. Mr. Jha is well-known face in the commodity world and has a deep knowledge of the commodity, agriculture policy, politics, consumer issues, and related sectors. He covers the commodity market, Mandi Live daily program on the channel. We welcome Mr. Mrityunjay Jha to the IPGA Knowledge Series. I would also like to invite Mr. Jeetu Bheda, our chairman IPGA, to give us the opening remarks for today. Good evening, everybody. I would like to wish you a very happy, healthy, and safe 2022. On behalf of IPGA, I am pleased to welcome you all to the first webinar of Knowledge Series initiative for the calendar year 2022. I would like to thank you all for making the IPGA Knowledge Series a great success over the last year. This year, we thought of approaching the crop outlook in a multi-pronged approach through our knowledge series. Our first webinar will focus on the view of Government of India regarding the crop outlook coupled with a number from the research organization. Given the inherent nature of the uncertainties of the crop numbers crunching, we decided it would be better to start with the expert presenting their view. Keeping this in mind, we would like to welcome Sri Rohit Kumar Singh, Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Dr. S.K. Malhotra, Commissioner, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and Dr. Shiv Sevak, Principal Scientist and Director in charge, the Indian Institute of Policy Research, that is called IIPR, from the Government of India, as well as from the Research Institute, Madam V.N. Saroj, Chief Strategy Advisor, AgriWatch, Mr. Nirav Desai, Director, GGN Research, to present their view on Kharif and Rabi crop outlook, expected production of the pulses. We have hosted this webinar together valuable insight from our esteemed guests regarding the overall pulses sector, the government's perspective about Kharif and Rabi outlook, and expected production of pulses. Research in the pulses sector, technological advancement, improvement in the yields of the pulses, and the new variety of pulses, weather-related aspects of Kharif and Rabi crop. I am sorry to inform you that due to some reason, Mr. Rohit Kumar Singh, Secretary, Ministry of Consumer Affairs, is unable to attend this webinar, and Mr. S.K. Malhotra will join later because he is busy in a meeting. Mr. Mrityunjay Jha, Commodity Editor and Anchor, Z Business, will be the moderator for this webinar. I am confident that these insights would prove valuable for us all in the understanding with the demographic of the pulses sector. I would also like to announce that IPGA, in collaboration with other bodies, will have an online event to celebrate the World Pulses Day on the 10th February 2022. We request you all to stay tuned and watch our updates for these events. We are very excited to celebrate this day with our colleagues all over the world, virtually in these difficult times. Before I hand over this floor, I would like to thank all the guest speakers, participants once again for joining us from across the globe. Thank you. Thank you very much, Mr. Bheda, for your valuable remark. इससे पहले कि मैं अगले स्पीकर पर जाऊं, एक दो सवाल सर मेरा आपसे होगा मिस्टर भेड़ा कि जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेमिनार आपका जो आईपीजीए का है पल्सेस के ऊपर कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या आउटलुक है प्राइसेस को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप इंडस्ट्री से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, एक सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये होगा कि ओवरऑल जो पल्सेस की इंडस्ट्री है इसको अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी दालों के दाम बढ़ते हैं तो डिमांड सप्लाई को लेकर चर्चा होती है,
मार्केट पैटर्न को लेकर के चर्चा होती है। तो डायनेमिक क्या है सर मार्केट के इस वक्त डिमांड सप्लाई को देखते हुए, क्योंकि सरकार की भी पैनी नजर है। हाल के दिनों में बहुत सारे एक्शन भी हुए दालों के ऊपर, जिससे आप वाकिफ हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप ओवरऑल अभी पल्सेस मार्केट का क्या सिनेरियो देख रहे हैं सर? Pulses market में, the main problem is, of course there is a good supply, market, is also running below MSP due to, the, huge supply of pulses. And I see that, government will, intervene and take, proper step to, control the prices, of the pulses, falling pulses, that is our main contention, and, we request government to have a, consistent policy for the pulses, that is the two important things, we would like to stress at this juncture. Thank you. Thank you so much, sir. इस पर बात करने के लिए. And now I would like to invite Mr. Dr. Shiv Sevak, Principal Scientist and Director in Charge, Indian Institute of Pulses Research. बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सेवक आपका, और आपकी स्पीच शुरू हो उससे पहले आपका परिचय देना जो हमारे साथ इस वक्त वेबिनार में जुड़े हैं बहुत जरूरी है। और दालों के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है उसमें आपकी गहरी पकड़ है, आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और आपने ये जानने की कोशिश की है कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है और किस पल्सेस के प्रोडक्शन का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इसको लेकर के आपने बहुत काम किया है। बहुत स्वागत है आपका, प्लीज सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Chairman, Mr. Beda ji, Chairman IPGA, Mr. Kothari ji, Dr. Malhotra Saab, Agriculture Commissioner, Government of India, Mr. Rohit Kumar Singh ji, Mr. M. Jha ji, Ms. Saroja, Mr. Desai, and Ms. Sonia, CEO of IPGA. First of all, I am thankful to Chairman IPGA for providing me time to speak in this very important webinar. My topic is production and productivity of pulse crops for food security, prospects, problem, and future research. So, as we know, pulses are very important for our most of Indians who are vegetarian, and they depend on the pulses for their requirement in protein. Per capita availability of pulses in India is around about 40 to 45 gram against ICMR recommendation of about 52 gram per capita. Lower consumption of protein causes some nutritional disorders known as hidden hunger. So, about 800 million people are undernourished, and 50% of women are anemic. More than 80 million children less than 5 years suffer from disorders, different disorders due to insufficient nutrition. Widespread occurrence of micronutrient deficiency disorders are also there. So, food legumes, these are very climate and nutritionally smart crops. They provide high nutrition, they are mineral rich, they have oil content also, they have symbiotic nitrogen fixation, they fix 3 to 6 million tons of atmospheric nitrogen
and they make our soil healthy. Rotational use of biofertilizer reduce greenhouse gas emission, reduce the risk of erosion and depletion in crop rotations, add in this higher soil carbon sequestration, climate smart crops, they adopt to change and contribute towards the mitigating effects due to certain climate changes. The major legumes are chickpea, pigeon pea, these mung bean, oat bean, lentil, peas, groundnut, soybean. These are also legumes, but other minor pulses are also there, like grass pea, rajmas, cluster bean, mood bean, cow pea, horse gram, and kawa bean. So important of pulses there. They are very rich source of nutrients, and these pulses they gave nutritional security, sustainable production, and ecological security is also there. So mineral contents in different pulses is given, just like calcium, phosphorus, iron, manganese, zinc. They are folic acid. They are rich in all these minerals. So as far as comparison of cereal and pulses is concerned, for different vitamins and other things, pulses are rich as compared to wheat and rice, and amino acid composition of pulses is very different as compared to cereals. They are very rich in amino acid, and they produce a good quality of protein. So share of pulses is also there in nutritional supply. Just world in Asia, comparison is given here. Food legumes, they function as food. So I have already just already explained that are rich. Some concerns are also there. The pulses are having some anti-nutritional factors, just like flatulence, and causes other type of diseases, and other sugars, raffinose, and other may escape digestion in gut and lead to abdominal discomfort, and lethyrus toxin in grass pea cause lethyrism, and these anti-nutritional factors are removed by different methods, by cooking, by soaking, so, and by also post-harvest processing. We use different methods to remove these anti-nutritional factors. Pulses Research Network. As we know, pulses are very important for India. So for research, we have very good structure. We have our institute, Indian Institute of Pulse Research, apex body for conducting the research at the country level. Under the ICR, we are conducting the basic and strategic research. And we have 4 regional stations in the country, in Dharwad, in Bhopal, in Odisha, and in Bikaner. Bikaner regional station is especially meant for the research for arid legume pulses, just like our moat bean, cluster bean, cow pea, and horse gram. And in Odisha, we are working for the management of pulses in rice fallows and other conditions. Besides this, we have 4 All India coordinated projects which are stationed at our institute. One is AICRP on chickpea, pigeon pea, mullark. Mullark is the group of crop is mung, urad, lethyrus, lentil, field pea, rajmas, and arid legumes in which we are dealing with 4 crops: cow pea, horse gram, cluster bean, and mood bean. So in this way, we have a very good
research network across the country through our regional stations and through our All India Coordinated Pulses Research Improvement Program in various crops. So impact of pulse research in India, increasing trends in pulses. In this way, we can say that chickpea, we got this year 11.99 million tons of the production, which was 7.33 during 14-15. In this way, we have got 60%, 63% increase in chickpea. In pigeon pea, we got this year 4.28 million tons, and we increase is 52%. In the same way, in mung bean, urd bean, and lentil, in all the crops we got increased production, and total production we achieved, it is record production, it is 25.72 million tons. In this way, total increase was 50% as compared to 2014-15. And due to this increased production, there is a reduction in the import of pulses during 2021, and we have a very good seed production program through our seed hub, which helps us in providing the quality seed of different pulse crops to farmers, and which directly help in increasing the productivity of the country and also the income of the farmers. Future targets for pulse requirement, it is by 22 we require 26.43 million tons. By 25, requirement will be 30, around about 30, and up to 250, the requirement will be 40 million tons. So this is the list I have given here. We have developed so many varieties for different pulse crops by our National Agriculture Research System, which include our coordinated center, our agriculture universities, our regional station, and others. So total, we have developed 775 varieties. In chickpea, our institute developed 11 varieties, pigeon pea 5 varieties, in which we have developed very recently 2 pigeon pea hybrids. In mung bean 13 varieties, would be 7 varieties. In this way, we have in all pulses we have developed total 65 varieties. We have certain landmark varieties, just like in mung bean, Virat, it is a super early variety which matures in 50 to 55 days. In lentil, we have developed 2 biofortified varieties which contain high zinc and high iron. In pigeon pea, as I have already told, 2 hybrid we have developed, IPH 1503 and IPH 09-5. One variety which is green seeded, which the seed of this variety remains green after maturity. It is developed from our institute. It is IPFD 10-12. So this variety helps us in off season by providing the green seed field pea for the vegetable purpose. And recently we have developed a high protein content variety in chickpea, IPC 2005-62. Its protein content is 26.4%. In this way, we have developed some machine harvestable varieties from our NAR system, and recently some mass product in chickpea for the wilt and drought resistant we have developed. We have also some salinity tolerant lentil lines varieties also. In cowpea, this is the list I have given here for the different states. We have so many varieties for the different states. In horse gram also same way. These are the varieties developed from different states. In cluster bean, guar, it is not directly a pulse crop,
but it is a leguminous crop. And in Rajasthan and some part of Haryana and Gujarat, its cultivation is there, and its cultivation is done for the production of guar gum, and its fodder is also used in dry areas for animals. And motbean is also a pulse crop. It is grown mostly in Rajasthan, and it used for the preparation of the snacks, just like bhujia, Bikaneri bhujia, which is prepared from this pulse. So there are certain varieties are there for different regions. This variety I have also mentioned. It is a Mungwen variety. The year of release is 2016. So it is cultivated throughout the country during the summer. IPL 220. It is this variety is just biofortified, and its protein content is 25.8. It is it contains iron, zinc, and other minerals. Its maturity is 110 to 115 days. So this variety, high protein variety of chickpea. This variety is chickpea variety, which contain 26.4% of the protein, and this is released for the late sown conditions and contain high protein value, and its yield is also good. This green seeded field pea variety, IPFD 10-12, as I have already mentioned about it, it is a green seeded variety. Seed remain green. This is the hybrid PNP IPH 1503 released by CBRC in 2019 for Northwest Plain Zone. This is also hybrid released for the Northwest Plain Zone. So this is the mass chickpea product which we have developed from the IIPR Kanpur, just like Samriddhi for the wilt resistant, and IPCMAS for drought tolerance, and PUSA 20211, which is also for the fusarium wilt resistant, and PUSA 10216 drought tolerant, and Super Anegri, it is fusarium wilt resistant. So these are the some mass products which were developed by our institute and other institute working on different crops. Chickpea mass production, which are in pipeline, these products will come in the future. So this is about the varieties which we have developed for the farmers for increasing the yield and for growing in different areas and different agroclimatic zones. And we have some technologies also, just like for conservation agriculture. We have zero tillage and residue retention in diversified crop system. So we have a long-term experiment, and the results are there. 25% input saving, including seed, 25 to 30% saving in irrigation water, and 25 to 36% increase in yield is there. Is more sustainable and for high income. This is the crop diversification.
As we know, pulses are known for the diversification of the crop. So we have efficient intercrops. We have different crop rotations in which pulse crops are fit very well, just like chickpea mustard. Intercrop is there. Lentil plus linseed, chickpea, wheat, rajma, potato, autumn sugarcane plus lentil or chickpea. So these are the some efficient intercrops are there, and planting techniques are there. We have raised bed system, normal bed system. So raised bed system in urd bean, scraps, water logging, and so mortality is reduced, just like in pigeon pea, 40% mortality will reduce and 25% in mung bean and urd bean. So it is meant for the better population of the pulse crops to overcome water logging situation, increase in input use efficiency, and this system increase the crop yield. One is pigeon pea transplanting. A contingency method is there in which we transplant 3 weeks old seedlings on the ridges. It is a contingent method for maintaining the population of the pigeon pea. As we know, due to water logging and other some diseases at initial state, pigeon pea die due to water logging and other things. So population may reduce. When population is not there, the yield will automatically reduce. So for that, we have made a contingent measure to transplant 3 weeks old seedling to maintain the population and to get the optimum yield. So there are certain irrigation systems, just drip fertigation in pigeon pea. We are also using sprinklers and laser leveling in summer and summer mung bean, urd bean, and in Rabi in chickpea and lentil. In this yield advantage is recorded in mung bean, urd bean, and with micro sprinkler at pod and seed development stages, and with the help of laser leveling. So weed is also causing very big loss in, especially in Kharif pulses and Rabi pulses also. But in Kharif pulses, the yield loss caused by the weed is more. So we have tried many these weedicide. So previously we are using pendimethalin as a pre-emergence. Now we are also using some post-emergence herbicide, just like imidazolpar in Kharif and Quizella FOP in Rabi pulses. So these weedicide are very effective in pulses, and they control and manage the weed very efficiently and increase the yield. We are also, as we know, pulses are fixing nitrogen from the environment with the help of some bacteria, just like rhizobium. So we are also screening different kind of rhizobia, which are very efficient, which show host plant relationship. Dr. Sevat, Yes, sorry to interrupt you, sir. We have a panel discussion also, sir. Okay, okay. हाँ, तो उसमें मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा. बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना. तो कुछ उसके लिए अगर बचा के रखें सर, तो ताकि हमारे अच्छा, काम आ जाए, तो ये हमारे जो ऑडियंस हैं अभी उनके लिए भी अच्छा रहेगा. हाँ जी. So okay, sir, we are just screening the rhizobia, different rhizobia and other bacteria also for just better nitrogen fixation. So in the plant protection also, we have some cultural method, host plant resistance is there, just variety development. So disease resistant variety development is the part of the host plant resistance.
So we are also high just resistant varieties for different diseases which are occurring in pulses, and we have also some management practices also by controlling the disease and insect pest by the chemical control. We have some. We are evaluating new molecules for controlling these insect and other thing. So these are the some biological control agent which are used, and among the biological control agent, trichoderma and PGPR are the most effective. And we in IIPR we have developed trichoderma named as the Landerma, which will be used in farmers' field for controlling the fusarium wilt and other wilt diseases. So these are the some IPM technology we have developed, IPM modules for by applying different cultural practices, by applying some our these fungicides and other things. So this is the IPM module for controlling the disease in different pulse crops. So this is our, sir, we have one IBA unit in which we have some pulse products which are just pulse dal we are just selling to our staff and other people, and these are different we just future outlook, right, sir, for genetic improvement for yield and quality traits, biofortified varieties with increased bioavailability of nutrients, fortification through crop management, especially pulses for sprout specific varieties of chickpea and moonbean, food legumes as a functional food, post-harvest processing for value-added products, safe storage practices, and reduced anti-nutritional factor to develop pulse very nutritional for our vegetarian population. So, sir, this is all about pulses research at our country. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much for your in-depth information sharing with us. और बहुत डिटेल में आपने बताया कि किस तरह से इंडिया में पल्सेस के ऊपर रिसर्च होता है, और जब हम एक कंज्यूमर हैं पल्सेस का और जब स्टेक होल्डर होते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा पल्सेस का जो क्रॉप का पैटर्न है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ये आपने बहुत ही डिटेल में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस VN सरोजा, and please start, ma'am. मैम आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. Good evening, everybody, and thank you very much, IPGA, for inviting AgriWatch to share our outlook on Rabi pulses with you. It's really a pleasure to be here. I'll be covering mainly Rabi pulses. So I'll just start with what happened in the last 12 months in terms of Rabi and Kharif 2021. Both Rabi and Kharif saw some weather events. I think most of us who've been in this, in touch with what happens in pulses would remember that last year lentils were doing very well until about February, and mid-February there were, lot of information coming about how rains had spoiled the yields in certain parts of the country. And the same happened in Moong also in Kharif this year, where the size of the seed kind of suddenly started to fall based on all the excess rain and kind of delayed and, spread out kind of a monsoon that we had this year.
However, this season also, we are quite optimistic about how things will happen. There's enough moisture in the soil. There's enough, everything else seems to be going fine. So that is something that we continue to be optimistic about. The other thing that happened was the heat wave in US and Canada, and therefore their crops, which we rely on, especially lentils, have been impacted quite dramatically, and that has also impacted the prices. In fact, at some point, I think they were even quoting 1100 USD, which is unheard of, I think, in India. But it's come down quite dramatically. But even so, the fact that they lost about 25% of their crop made a big difference to the entire globe. The saving grace in all this has been that Myanmar has done well. The crop size for all the commodities that we buy from them have been doing well. And that is why, if you look at what happened in the last year, chana, tur, moong, and urad have stayed somewhat in a range. And lentils, the prices moved up quite dramatically. Now, with this as the backdrop, I want to start with what when we look at Rabi 2021, what's going to happen. So the key factors that we're looking at is, one, as I mentioned earlier, the extended monsoon season, the cyclonic storms that caused a lot of damage in a lot of areas where people were supposed to start sowing. So there were waterlogging issues. There are still certain pockets of India where, we've been looking at moong sowing and it has not happened yet. And they are looking to sow mid-February and later and take it as summer moong rather than Rabi moong. And these are all stuff that we're going to have to watch out for. And as, the sowing got delayed more and more, you will find that the yields will also get impacted if the temperatures rise quite dramatically around the time of maturity. So while winter started late, we are hoping that winter will end late also and not become a smaller, duration and therefore impact the maturity. Every year, again, frost, hail, and rain in February has affected stuff like onions more often, but also lentils last year. And that's something, again, that we need to watch out for. And as sowing is still not fully, let's say, closed off, we find that mustard is currently the farmer's favorite choice. So a lot of area that we were hoping would move from, say, a wheat to pulses has actually moved to mustard. And of course, there have been fertilizer availability issues and seed availability issues. So these will also have some impact, but hopefully not as much as, we fear. This is the latest information that Ministry of Agriculture put out. And this is the acreage that they have shown us. And if you see that, I'd like to impress that because of the rains in November, December, the sowing had been quite delayed. And especially gram and lentil, it's quite a pleasure to now see that, it's caught up over last year. And this thing, it had all been in the negative for quite a bit of time. And it has caught up. And as I was mentioning earlier, moong is one that we still kind of lagging. The only saving grace being that Rabi moong is a much smaller crop, and therefore, we as a country, we would be able to tide over this. But both the ministry as well as the farmers that we've been speaking to are all hopeful that they would be able to sow and bring out as summer moong. And just as Dr. Sevak was pointing out, there are a lot of small duration moong varieties now available, and they're all looking to sow that. These are our chana estimates. One aberration that we noticed was this Gujarat. Normal year, their acreage would be about a third of this. And this year, they're saying that a lot of non-traditional districts have sown chana. And
therefore, their production, while we have moderated the yields based on, what we think would be the non-traditional districts that they are experimenting with, this has sort of helped the total number for the production of our estimate for production to come very close to, last year, or a little more than last year as of now. Last year we had projected that this we had estimated this production at 97.67. So in comparison to that, we are right now estimating the new crop to be 103. All other states, as I was mentioning, they've done well, and therefore we think that this crop will be good for this year. This is the balance sheet for the last year and the coming year that we are projecting. And if you see here, we think that, overall, we're going to be quite comfortable in terms of what we need and what we have. The opening stock for the year is slightly lower than last year, but the crop size itself would be bigger, and therefore it will all be moderated and we should have no issues. This has been the price movement over the last 3 years for chana. And if you notice here, this hike came in September 2020. And since then, it has got moderated somewhat, again, September here. So this season also, we think that it will all stay in this range and not actually come down to what was probably there the previous year. I mean, 2019 to 2020, the range that we saw, we sort of think that it will not go back to this. And this is something that is led also by the in general price increases that we've seen through all the pulses, whether it's tur, lentil, or any of the others. Next, I'll move to masoor. Lentils, the sowing had been very slow. Everybody was a little worried, especially because Bihar and Uttar Pradesh, the traditional areas where masoor is grown, was waterlogged for a long time. But now the acreage has completely caught up over the season. And we think that the crop size will also be very good. And, it will be at least 10% higher than last year. This is our masoor balance sheet. And I said, the production is likely to be a little higher. And at the same time, our consumption will also be slightly higher. And import will, of course, depend on the, availability in Canada, as well as what prices they quote. But given if our crop size is good and it turns out even better than 12.9, then we can be very sure that Canadian prices will also come down and we'll be able to import a little bit more if we need. Though right now, we don't feel that there would be a need and there would be, much higher imports. This has been the price movement of masoor at Kanpur for the last 3 years. And this was the, jump that I was mentioning to you in February last year, which was all driven by the weather. So this February is also going to be rather, something that we'll have to critically watch and manage from there. This is our Rabi Moong production estimates. As I mentioned, the moong yields we've taken a little lower than last year, but even so, we think that the size itself would be pretty good.
And same with urad. I think they'll both match last year any which way, and there shouldn't be a problem in terms of availability for both of them. And both, as we all know, the crop in Myanmar has also been excellent. So in terms of availability for moong and urad, we don't kind of expect any problems at all. This is our balance sheet for moong. Slightly high, slightly lower stock to use ratio, but nothing alarming as far as we can see. This is the urad balance sheet. So what we lose in terms of production, we should be able to import from Myanmar, which is why I was mentioning that the prices would probably remain in range. This is the moong price, which has been in the range of 7,500, 6,500 and 7,500. And we think that it will continue to be in this range. This is urad. So this is the more greater details on our price expectations. So in terms of chana, as I said, most of the year, the prices are expected to remain supported above 5,000. During peak arrivals, it may be at about 46, and upside may be capped at around 5,600 in the first half of the marketing year, and at level of 58 to 6,000 around September. As we saw in the price slide also, the price tends to go up around that time, which is when the farmer also starts to decide what he's going to sow. So it's going to be a decent year for chana as far as we can see. Yeah. In terms of masoor, again, the prices have continued to stay high despite the stock use ratio because of the import dependence and the sudden fall in production numbers last year. So this year, we think that it may marginally come down to about 68 until once the new crop arrives, but it will continue to be in the 7,000 to 7,800 range most of the year. Urad, as I was mentioning, the market has settled in the range of 65 to 8,000, and this will most probably continue until June with a few spikes, and then July onwards, it will depend on the next crop. Moong, again, availability is better, and the prices will remain in the 61 to 6,600 range most of the time, and July will depend on the sowing progress. So I'd just like to end with a small anecdote of sorts. I'm now old enough to kind of talk about the good old age when I was young. And I think the first pulses shock that happened in my life was probably when I was about 18. And for the first time, I think the tur dal went from 18 rupees to 25 rupees. And it kind of, shook the budgets of all the salaried middle class families. And my mother started to blend lentils with the tur dal to make sambar, and there was like total revolt in the family, and most of the families around us also suffered that. And last year, for the first time in my lifetime, I took her the bill of my grocery and showed my mother. For the first time, lentils was more than tur. And I said, इस बार जो है हम मसूर में तुअर मिला के आपको खिलाएंगे तो आपने तुअर में मसूर मिला के Yes.
So life has changed dramatically in the Right, last 40 right. years. And it's all going to be new. We're going to learn what happens every year. Most of it, I think, is because of the weather events that keep happening. And of course, as our disposable incomes go up, we demand also more, increases quickly, and our availability is much lower. So that's something that we'll have to manage. Right, ma'am. Right. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत डिटेल में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्राइस के बारे में डिटेल में बताया है कि किस तरह से प्राइस का पैटर्न रहा है और किस तरह से प्रोडक्शन का पैटर्न रहा है और कहां पर ज्यादा और कम हो रहा है। इसके ऊपर आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक और हमारे स्पीकर हैं मिस्टर नीरज देसाई, जो कि डायरेक्टर हैं जीजीएन रिसर्च के, और बहुत जीजीएन रिसर्च की बहुत गहरी पकड़ है रिसर्च के ऊपर, ना सिर्फ पल्सेस में बल्कि ऑयलसीड में भी। और आप टेलीविजन पर भी नीरज देसाई जी को देखते होंगे, इनका बहुत वैल्यूएबल इनपुट होता है ऑयलसीड को लेकर और बाकी कमोडिटीज को लेकर। नीरज देसाई, प्लीज सर स्टार्ट। आप म्यूट पे हैं नीरज जी, अनम्यूट कर लें प्लीज। Thank you, Mrityunjay ji, and thank you IPGA for giving me this opportunity. So my topic for today is the Kharif pulses, which is basically the crop. Kharif crop is already over, but I'm just trying to give you a review on that. I'm just sharing my presentation also. आपको पीपीटी की क्या जरूरत है नीरज जी, आप तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। नहीं ठीक है ना सर, बट थोड़ा सा पीपीटी में sorry. Yeah. So the Kharif pulses this year, we see the area was higher by about 6.58%, and about roughly around 8 lakh hectares sowing was higher. Majorly the timely monsoon arrival had got the area higher, and then we'll see how it has gone. All the Kharif pulses recorded nearly same or a marginal increment in area, except Moong, which had declined in area. So the go back in what happened. So the June rain started a little early. So you see this 9.6% extra rains in June versus normal. Then we started having a deficit in July, and further there was a slight deficit in August, though there was sporadic rains which kind of gave relief to the crop. And again, September, the rain came back. If we go region wise, Northwest India had about 3.9% of deficit, and that is what we see in Rajasthan and Gujarat. We have complaints, whereas Central India and Peninsular India had 3.7 to 10.7% higher rains. So as mentioned, monsoon took a early good start, and then there was a little bit of a problem in Rajasthan and Gujarat, where there was the monsoon was on a weaker note. July was deficit. August was also a little deficit, but then September kind of covered it a little bit. I would say the major September rains brought back the crop, because we got rainfall at the time of the yield formation when the pod filling happens. So if we look at the area of Kharif pulses, Tuar area was about 1.84 lakh hectares higher, about 3 to 4% higher. Urad was nearly the same. Moong area was showing the same, but we had a clear indication from the traders in Rajasthan, and the Rajasthan ground report was showing the area was at least down by 20-25%. And I think the market is already seeing that effect in supply. So the Moong area was lower. In Tuar also, particularly the crop area was higher from Karnataka, where there was about 10 to 13% higher area. So Urad, I would say we had an early monsoon or a timely monsoon. So the sowing was well timed. There was some losses due to heavy rains and flooding in North MP, but otherwise remaining crop prospered well. And I would say we had a same or a slightly better crop than last year. And
seeing the post-harvest arrivals and price trend and everything, there is no major change on that stance. Urad imports from Jan to Dec in 2020 was 359,000 versus this year we have increased the import a little bit at 486. Mung beans, yeah. So mung beans, as I mentioned, we see a clear area reduction in Rajasthan, as well as complaints of not very good yields in Rajasthan. So the crop of Rajasthan was very poor. So because of that, the overall mung production was lower than last year. And the mung is a crop which comes every 3-4 months. Now we have the Rabi mung that will be coming, and then there will be another summer mung that will be coming. But still, I would say the Kharif mung lower production does create a shortfall for the entire year. If there is a shortfall in the Kharif mung, then we are already tight on that. And we can see from the import also, last 2020 we had imported 29,000 tons of mung. This year there has been 203,000, like 2 lakh tons of import of mungs already, and there is still demand in mung import. Tuar, I would say broadly the weather has been good in all the areas. Even I would say the October-November weather has been good. A little bit of a October early heated October was there, but then we had a little bit of rains in November and early December, which again gave a little bit of boost to the tuar crop. So I would say crop has been more or less nearly the same. Yields are good, but fail to beat the last year's higher number, because the last year was already a higher number. And on account of higher acreage and lower than last year, I would say the tuar crop production is same or slightly lower from last year. Also, what I'm seeing is the government continuous push to keep the prices maintained, to keep stock limits, to keep other kind of pressures, is definitely depleting the stocks in the pipeline also. So we are not understanding where the crop pipeline or these stocks of all the pulses are reducing. So I think we will also see, even after reasonably good production numbers, because of depleting stocks, maybe in the second half of this year, we will be seeing prices being a little more friendly, forming up a little bit across pulses, and especially though my topic is Kharif, but I feel also on chana the prices are too depressed. So maybe in the second half of this year, the prices in chana will also be better than the current prices. Tuar import from Jandek was 2,78,000 in 2021 was 5,59,000. So we are seeing that the stock level reduction is the reason why the import of all the pulses is on a higher note in 21. Government crop number for mung, urad and tuar for the just for our reference, the above production number is according to the first Kharif advanced crop estimate, but I feel especially for the mung it's a little too optimistic from the actual number. So in conclusion, I would say pulses area is not showing any major change over last year in Kharif. Urad crop is definitely higher from last year. Tuar crop is same or slightly lower from last year because the last year's number was very high. So I'm not saying it's a bad tuar crop, but it's because the last year's crop was good. Mung has been already mentioned that it's not a very good crop. So that's the conclusion. And a very different note on this for my friends from the pulses industry here is that I feel the government has been very, very successful in containing the prices. But in this whole process, the NAFED stock has been also depleting. And overall, the stockist stock has also been depleting. I think with the upcoming crops, now the farmers might not be willing to sell their crop at a very lower price. Right. So from going on from here, say maybe from March, April onwards, the prices will tend to be more and pressurized.
I would just suggest to my friends in pulses industry not to panic for a month and a half to liquidate their stocks. Thank you. थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और अब हम पैनल की शुरुआत करेंगे और पैनल में हमारे साथ 4 एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर विमल कोठारी, वाइस चेयरमैन इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर शिव सेवक हैं जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर इंचार्ज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के। हमारे साथ नीरव देसाई हैं, डायरेक्टर हैं जीजीएन रिसर्च के। और साथ ही मिसेस वीएन सरोजा हैं, चीफ स्ट्रेटेजी एडवाइजर इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि पल्सेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और पल्सेस को लेकर जो बात आखिर में नीरव जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पैनिक नहीं करना है। लेकिन पैनिक कैसे नहीं करना है, कब नहीं करना है और गवर्नमेंट कब पैनिक कर जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि पल्सेस को लेकर बहुत सारे डिसीजन हुए हैं जिसका इंडस्ट्री ने विरोध भी किया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल मिस्टर कोठारी आपसे होगा। आप सुन पा रहे हैं सर विमल जी? यस यस, हाँ यस, आई कैन हियर यू। यस यस। आईपीजीए का सर अपना एस्टिमेट क्या है? क्योंकि अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं सोइंग के, प्रोडक्शन के, डिमांड सप्लाई के। आईपीजीए का अपना एस्टिमेट क्या है प्रोडक्शन का और ओवरऑल सप्लाई का, पल्सेस का? Thank you, Virginia ji. First of all, let me tell you, though the IPGA is the apex body of the trade, but we are not doing any survey at the moment, and we are very much dependent on the government numbers. We follow the government numbers, and also the agencies like AgriWatch and GGN, and so there are some other agencies. So we take the feedback from these agencies and intimate our members accordingly. But we do not have any independent survey as far as the IPGA is concerned. So we are dependent on the government as well as these private research companies. Okay, ठीक है। नहीं, मैं आपसे, चूंकि आपने कहा कि आप गवर्नमेंट के डेटा और अलग अलग एजेंसी के डेटा पर आप डिपेंड हैं, लेकिन सर मैं एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि एग्री मार्केट के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। अगर आप किसी भी कमोडिटी को ले लें, अभी हम पल्सेस की बात कर रहे हैं, तो जो फिगर आते हैं सोइंग के या प्रोडक्शन के, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। चाहे वो गवर्नमेंट का डेटा हो या ट्रेड का डेटा हो, इंडस्ट्री का डेटा हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है सर। और इस बड़े फर्क को देखते हुए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आगे डिमांड सप्लाई के हालात क्या होंगे। ये फर्क कैसे कम होगा ताकि सब एक ही पिच पे रहें और ये अंदाजा लग पाए कि हाँ एक्चुअल डिमांड इतनी है, एक्चुअल सप्लाई इतनी होने वाली है? कोठारी जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो डिमांड है, डिमांड हमारी जो है, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर कि गवर्नमेंट पेग्ड द डिमांड एट 25.6 million tons, and if we can say that we are adding about 1 million ton to our demand as far as IPGA's estimate is there. By 2030 India will require 32 to 33 million tons of pulses. So we know what the demand is going to be, I mean the estimates, and as far as the production numbers are concerned, as I said, that we are definitely dependent on the government numbers. Though you're right in saying that these numbers sometimes do not match the factual situation, the ground reality. But I think the government's the government survey are not that bad as we think. Even I tell you, last year the China numbers, the government which has given, I think this is more close to the reality than the ground reality. Whereas the numbers given by the private trade those were very far from the government number, and they were very far from the reality. Exactly. So I definitely, Mrityunjay ji, we have to do more scientific survey and to get the close numbers, because if you see in the Western world, their estimates, their production estimate is very close to the ground reality. So I think we need to apply those techniques, and IPGA, let me tell you, in future we are going to do that, so that we will try to give the numbers to our members and to the benefit of not only our members but to the benefit of the farmers, to all the people related to the agriculture business, and to the country and to the government also. Okay,
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इसके ऊपर काम हो रहा है, होना भी चाहिए, तभी एक मार्केट को सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब डॉक्टर सेवक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में बताया कि जो प्रोटीन का पैटर्न है वो किस तरह से है, और चूंकि इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर है पल्सेस का, आपने एग्जांपल भी दिया कि जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है जितना होना चाहिए उससे 10 ग्राम कम है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 10 ग्राम कम है हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन। तो ये जो प्रोटीन का पैटर्न है सर, जो आपने बताया कि अलग अलग जोन में किस तरह से पैटर्न है, क्या इस देश में उतना पोटेंशियल है? जो एक पैरामीटर तय किया गया है प्रोटीन का, क्या इंडिया में उतना पोटेंशियल है कि अगर सही क्रॉप पैटर्न को अपनाया जाए, सही इंफॉर्मेशन हो कि किस एरिया में कौन से पल्सेस की खेती ठीक तरीके से हो सकती है, तो क्या हम उस प्रोटीन के पैटर्न को अचीव कर सकते हैं? डॉक्टर सेवक? Yes, please. May I audible? या सर, प्लीज गो अहेड। हम प्रोटीन की जो हमारी खपत है उसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पल्स प्रोडक्शन के टारगेट है, अगर हम उनको ध्यान में रखते हुए अपना जो पॉलिसी है और पल्सेस को डिफरेंट एरियाज में ग्रो करने के लिए और डिफरेंट स्टेट्स जो हाई पल्स प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं उनमें पल्स को ग्रो करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके। और हमारे पास हमने एक सीड हब की एक योजना चलाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर सेवक। मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं सर। एक तो आपने सीड कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। क्या हमारा लैंड तैयार है? क्या मतलब हमारी जमीन में उतना पोटेंशियल है क्या कि हम उस प्रोटीन वाली वैरायटी के पल्सेस का प्रोडक्शन कर पाए? पहला, जो आपने सीड की बात कही, क्या सीड अवेलेबल है हमारे यहाँ? हम सफिशिएंट हैं सीड में सर? सीड में और लैंड में? सीड में हम सफिशिएंट है, हम अब योजना चला रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने सीड हब योजना एक लॉन्च करी थी। अच्छा। और वो जो सीड हब हमने पूरे कंट्री में 150 सीड हब बनाए हैं। केवीकेज में है, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में है, यूनिवर्सिटीज में है। हाँ। जो कि क्वालिटी सीड, ब्रीडर सीड, जो हमारा बेसिक सीड होता है, अच्छा, उसका प्रोडक्शन करते हैं। ओके। तो सीड में हम सफिशिएंट हो जाएंगे, जैसे कि हमारी प्लानिंग चल रही है। कब तक हो जाएंगे सर? कितना टाइम लगेगा सफिशिएंट होने में? अब टाइम का तो अभी मैं इतना एनालिसिस हम लोगों ने किया नहीं है। अच्छा। पर जो योजना चल रही है उसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अच्छा। हमारे फार्मर्स तक क्वालिटी सीड पहुंचे, वो भी अच्छी वेराइटीज का, जिससे आप कह रहे हैं कि आप लोग उसके ऊपर बढ़। काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये अचीव कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि पल्सेस और ऑयल सीड यही दो हमारे सबसे बड़े कंसर्न वाले एरियाज हैं इंपोर्ट को लेकर के, खास करके एग्री कमोडिटी के इंपोर्ट में इसको लेकर के चिंताएं रहती हैं बीच बीच में। अब सरोजा मैम, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत डिटेल आंकड़े सामने रखे हैं। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं मैम कि इस पूरे साल में दलहन की डिमांड, पल्सेस की डिमांड और सप्लाई, क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त रहेगी या हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा? सप्लाई का सिचुएशन टाइट रहेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे? डिमांड सप्लाई का इक्वेशन क्या रहने वाला है इस पूरे साल? मैम आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कर लें। Last few years, what we've seen is the demand has more or less been stable, right? The demand seems to be in the range of 100 to 103. Even the year when we had 3 months of, the shutdowns, lockdowns, when, eating out became much lower, eating, pakoras became much lower, and so on and so forth. We still think that the demand overall did not fully, vanish. And therefore, that amount is always there. And we are always short by, I think, about 15 to 20%. So that is always going to be there for the next few years. And we will have to import. Okay, fine. The problem usually comes in the timing of the import and the timing of the crop. Right. So that is where, जो हमने सितंबर की बात की थी चने में. Exactly. Yes. The
what we have domestically ends and then the supply has to come from somewhere else. That kind of a thing, the timing causes a lot more this thing, but the gap will remain for a few more years. Right. Okay. Okay. Right, ma'am. Mr. Neeraj Desai. Yes. Yes, मृत्युंजय जी. हाँ नीरज जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो आपने अब तक डेटा एनालिसिस किया है, पर एक बड़ा क्वेश्चन, चूंकि अभी बजट भी आने वाला है और फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, ये बड़ा डिबेट का इशू इस देश में बहुत लंबे वक्त से रहा है. इसके ऊपर बातचीत भी होती है, काम भी होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. तो मैं अगर पल्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि जो आपने डेटा का एनालिसिस किया है, उसके आधार पर क्या आप ये कह सकते हैं, जो हमारे ऑडियंस इस पर जुड़े हैं उनको, कि इस बार किसानों को सारे पल्सेस की एमएसपी मिल जाएगी या एमएसपी से ऊपर का भाव मिल जाएगा? आपका ग्राउंड एनालिसिस क्या कहता है इसके ऊपर? नहीं, कुछ पल्सेस का प्राइस उनको एमएसपी से नीचे मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार आपके न्यूज चैनल पे भी डिस्कशन होता है. तो हमारा हमेशा एक डिस्कशन रहा है कि गवर्नमेंट के लिए हमेशा एक ये फाइट रहती है कि एक जगह पे उनको कंज्यूमर को लोअर प्राइस में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स दिलवाने हैं, और उसी के सामने दूसरी तरफ वो किसानों को अच्छे प्राइस दिलाना चाहते हैं. बट आई फील इन द लास्ट 5 to 6 months गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा कंज्यूमर के तरफ ज्यादा हो गया है, और उसमें पर्टिकुलरली कुछ पल्सेस इग्नोर हो गए और बिलो एमएसपी भी ट्रेड कर रहे हैं. और ऐसा लग रहा है कि ये रबी के कुछ पल्सेस बिलो एमएसपी भी करेंगे, जिसका कि फार्मर को थोड़ा सा एक किस दलहन की बात कर रहे हैं नीरज जी आप? किसके दाम एमएसपी से नीचे रहेंगे? सो चना का प्राइस हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एमएसपी के बिलो चल ही रहा है मार्केट्स में, और वो चलता भी दिख रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा, सरोजा जी ने भी बोला कि इसमें मस्टर्ड के सामने चना का एरिया नहीं मिला. आज वीट का हर जगह रबी में एरिया रिड्यूस हुआ, तो किसान के सामने एक जगह पे 4800-5000 रुपीज का चना था और एक जगह 8000-9000 रुपए का मस्टर्ड था. जनरली मस्टर्ड और चना का प्राइसेस इन टैंडम चलता, गिव एंड टेक 500 रुपीज. तो आज वो बहुत बड़ा गैप हो गया. इसीलिए आप देखेंगे कि स्टेट लाइक एमपी, नॉर्दर्न एमपी में भी मस्टर्ड का एरिया बहुत बड़ा है, राजस्थान में भी एरिया बड़ा है, यूपी में भी बड़ा है. तो ओवरऑल इस बार क्लियर है कि पल्सेस में पर्टिकुलरली चना में मस्टर्ड के सामने एकरेज में हार गया है. तो अच्छा, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट इंडिकेशन है इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए और देखने के लिए कि थोड़ा अब रबी हार्वेस्ट आने पे किसान पे भी फोकस करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. विमल जी, एक बड़ा सवाल सर ये है, चूंकि हम लोग दालों की बात कर रहे हैं, पॉलिसी को लेकर बहुत बातचीत होती है कि, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका ये कहना होता है कि पॉलिसी में इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करना चाहिए, इससे ट्रेड का सेंटीमेंट बड़ा हैम्पर होता है. और जब हम प्रोडक्शन की, डिमांड सप्लाई की आउटलुक की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसी से भी अटैच है कि आपकी पॉलिसी क्या होती है. अब जैसे कि एग्जांपल सामने है, पॉलिसी अगर हम छोड़ भी दें तो किसान सेंटीमेंट को पकड़ता है. अब आप देखिए कि मस्टर्ड के दाम बढ़ गए तो किसानों ने मस्टर्ड का रुख कर लिया. तो पॉलिसी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पल्सेस को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि इंडस्ट्री में भी स्टेबिलिटी हो, फार्मर के मन में भी स्टेबिलिटी हो कि नहीं, पल्सेस की खेती करनी है तो करनी है? आपने ठीक कहा मृत्युंजय जी कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है दालों पर. कल हमारी मीटिंग चेयरमैन सीएसीपी के साथ हुई थी और हमने उनको बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं. हमने एक तो ये जो पल्सेस में जो एमएसपी जो बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि ये जो एमएसपी आप बढ़ा रहे हैं, इसको अगर खाली एमएसपी से लिंक करेंगे प्रोडक्शन को तो उससे हमारे कंज्यूमर्स अफेक्टेड होंगे. तो हमारे को आवश्यकता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो काफी कम है उसको बढ़ाया जाए. जो हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ दालों में, जैसे अभी प्रेजेंटेशन किया उसमें
तुअर में, मूंग में और तुअर में देखें तो 700, तुअर में 700 किलो के लगभग एवरेज है, 700 से 800 किलो। उड़द में 600-650 किलो है और मूंग में तो उससे भी ज्यादा कम है। तो ये जरूरी है कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और प्रोडक्शन बढ़ाएं। जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसको हम सिर्फ एमएसपी बढ़ा के उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें उसके लिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने सीएसीपी को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आज 4 सालों से इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस आ रही पॉलिसी में, हर 2 महीने 3 महीने में सरकार की तरफ से एक इंटरवेंशन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। इसलिए ट्रेड इंडस्ट्री नॉट ओनली विद इन इंडिया, इवन इंटरनेशनली कम्युनिटी आल्सो इज गेटिंग वेरी कंफ्यूज कि हम इंडिया की क्या पॉलिसी है, कब वो उनको इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, उनको एक्सपोर्ट उनकी क्या स्थिति बनेगी, उनकी डिमांड सप्लाई क्या है। तो ये पॉलिसी जो है बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो रही है लास्ट 3-4 साल में, उससे हमारी ट्रेड इंडस्ट्री डेफिनेटली इसमें इफेक्ट हो रही है। इसमें सिर्फ ट्रेड इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रही है, इसमें फार्मर्स भी अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि फार्मर्स को भी नहीं मालूम कि कौन सी पल्स उनको लानी है, कब उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अभी जिस तरह आपने देखा होगा कि लास्ट 6 महीनों से तुअर और उड़द का इंपोर्ट खोला है, जो बार बार हर 3-3 महीने में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह नहीं करके उनको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी चाहिए। अगर आपको इंपोर्ट करना है, आपको लगता है कि अगर ये शॉर्टेज है, आपको एक एस्टिमेट एक साल भर का पहले बनाना चाहिए, तो आपको साल भर में इंपोर्ट की पॉलिसी अनाउंस कर देनी चाहिए, ये साल हमारी पॉलिसी ये रहेगी। हर 2 महीने में 3 महीने आप एक पॉलिसी लेके आते हैं, न तो ट्रेड को मालूम है, न फार्मर को मालूम है, न इंपोर्टर को मालूम है, न एक्सपोर्टर को मालूम है। तो इसमें काफी सारे इशू पॉलिसी को लेकर है। एक बात मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो येलो पीज है, जिसके लिए भी हमने कल सरकार को आग्रह किया है कि येलो पीज को ये समझते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो समझते हैं कि येलो पीज जो है एक चने का सब्स्टिट्यूट है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। येलो पीज अपने आप में एक अलग कमोडिटी है, एक डिस्टिंक्ट कमोडिटी है, इसकी अलग डिमांड है। इंडिया में 20 लाख टन येलो पीज और ग्रीन पीज मिला के चाहिए, जबकि हमारे यहाँ उसका उत्पादन सिर्फ 5 लाख टन होता है और ये काफी सालों से स्टेगनेंट है। और ये एमएसपी में भी आपको बता दूं कि एमएसपी ब्रैकेट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमने इनको ये भी आग्रह किया है कि आप इसके बारे में विचार करें। पॉलिसी मेकर्स को जानना चाहिए कि हमारे यहाँ कई तरह की दालें होती है देश में, इसलिए हमें सिर्फ 2, 4, 5 दालों पे फोकस नहीं करके सभी दालों पे फोकस करना चाहिए और उनके प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ 2-4 दालों पर फोकस ना हो, ज्यादा से ज्यादा पल्सेस पे फोकस हो। एक पहली बात। और दूसरी बात, जो बात कोठारी जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रीक्वेंट चेंज पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। आप 1 साल के लिए पॉलिसी अनाउंस कर दें, ताकि ट्रेड के मन में भी वो बात रहे कि हाँ 1 साल के लिए ये पॉलिसी है, ऐसे ट्रेड करना है। फार्मर के मन में भी रहे कि हाँ अब ये बात आ गई है, अब खेती हमें इस तरह से करनी है। अब डॉक्टर सेवक, बिल्कुल संक्षेप में सर आपसे 1 मिनट में जवाब चाहूंगा कि क्योंकि दाल और तेल इसका हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वक्त वक्त पे। आप जरा बताएं कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर मैं सीधे आपसे पूछूं कि उत्पादन बढ़ाना है, ये एक मोटो है सरकार का भी कि हाँ उत्पादन बढ़ाना है, इसके ऊपर फोकस रहता है, लेकिन कैसे बढ़ेगा, मतलब एक एक्सपर्ट का व्यू क्या है इसके ऊपर कि जिसको फॉलो करके हम उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसका आंसर क्या है आपके पास डॉक्टर सेवक? उत्पादन बढ़ाने के लिए तो हमें जो नई वैरायटीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, उन पे डिपेंड होना पड़ेगा, उनके बीज पर डिपेंड होना पड़ेगा, उनका सीड हम फार्मर तक पहुंचाएंगे। अच्छी वैरायटीज का अच्छी क्वालिटी सीड जब फार्मर्स को मिलेगा तब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके साथ थोड़ा हमको मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पल्सेस ज्यादातर फार्मर्स ड्राई एरिया में करते हैं, ड्राई एरियाज में ही लगाते हैं, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। अगर पल्सेस में एक इरिगेशन मिल जाए तो उससे भी प्रोडक्शन काफी बढ़ सकता है। और फार्मर्स जो है वो जो ड्राई एरियाज में ही पल्स को सोचते हैं कि ये पल्स क्रॉप है ड्राई एरियाज के लिए ही, और उस पर इतना ध्यान भी नहीं देते। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बीज और थोड़ा मैनेजमेंट जो हमारा है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जी, मैनेजमेंट को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका कि मैनेजमेंट बेहतर हो, थोड़ी सीड की व्यवस्था हो जाए और फार्मर को अवेयर किया जाए कि आप अगर दालों की खेती करेंगे, क्रॉप का पैटर्न बदलना बहुत जरूरी है। हो ये रहा है कि देश में अब आप देखिए कि पंजाब का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हरियाणा का एग्जाम्पल सामने है। अगर गेहूं और धान की खेती हो रही है तो हो रही है,
बड़े पैमाने पर हो रही है, सरकार के पास रखने की जगह नहीं है, किसानों को उतना भाव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि एक सेट पैटर्न हो गया है, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं, उसको बदलना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में सरोजा मैम, एक सवाल ये कि अभी फ्यूचर मार्केट और महंगा रेट हो रहा है, पल्सेस जो उसके ऊपर ब्लेम होता है। डाइवर्सिफिकेशन है, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। पंजाब हरियाणा में पल्सेस को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, दोनों राइस क्रॉपिंग सिस्टम में। इससे सॉइल हेल्थ भी अच्छी होगी, इससे इन दोनों क्रॉप के ग्रो करने से सॉइल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सॉइल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सरोजा मैम, बिल्कुल संक्षेप में आप जरा बताएं कि क्या आपको लगता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर मार्केट की वजह से महंगाई बढ़ती है? मैं दालों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं, क्या दालों की जब महंगाई बढ़ती है तब फ्यूचर मार्केट को ब्लेम करना ठीक है क्या, या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? ये तो आप बड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज दैट नहीं, पॉलिटिकल नहीं है मैम, ये आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ सवाल है। The fact is that all research has shown that futures and cash markets move together and they lead one to another. It is not that one drives the other. They both drive each other. And the stocks that are available in the market and the future stocks available is what the market assesses and decides what they are willing to pay in the future. Okay. So that is definitely one of the key things. But I think in India, we've not let the futures market develop fully. And therefore, if the crop is very small, it is possible to corner the market. That is also a reality of this thing. I would say if they open wheat, rice, and crops like that, nobody can corner the market, and that market would then set the futures market. मैम, ये डायरेक्ट जवाब नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रहा है, अलग अलग कमेटियां बनी हैं। विमल कोठारी जी, अगर मैं साफ तौर पर, क्योंकि अभी देखिए 200 से ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं सर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, आप जरा बताएं कि तमाम स्टडी के बावजूद क्या आप लोगों ने ये पाया है कि हाँ, जब महंगाई बढ़ती है तो फ्यूचर मार्केट जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? देखिए मित्र जी, ये इस फ्यूचर मार्केट जो लिंक है वो डिमांड एंड सप्लाई से काफी प्रभावित होता है। जब कोई भी कमोडिटी में शॉर्टेज होती है तो उसमें फ्यूचर मार्केट में जो स्पेकुलेशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। इसलिए सरकार ने, जैसे पिछले साल आपने देखा कि ऐसा उस समय आशंका थी कि दालों का जो उत्पादन है, चने का है या तुअर उड़द का जो उत्पादन है, उसको देखते हुए एक बार ये आशंका बन रही थी कि दालों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। प्राइसेस को, दामों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने वो कदम उठाया और उन्होंने जो चने का जो फ्यूचर्स था उन्होंने उसको स्टॉप किया। ये देखिए, जो फ्यूचर मार्केट है वो उस स्थिति में सही चलेगा या उसके जो फंडामेंटल्स है वो तभी सही होंगे जब आपकी जो लिक्विडिटी है मार्केट में, जो अवेलेबिलिटी है वो बराबर बनी रहे। अगर कोई भी चीज की शॉर्टेज होगी तो उसमें फ्यूचर्स मार्केट में जो है स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटी है वो बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए सरकार ने ये इस तरह कदम उठाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार हमारे यहाँ उत्पादन सही पैमाने पे हटा देना चाहिए सर कोठारी जी। हाँ जी, अब जो फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन है पल्सेस में, खास करके चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर, आपको लगता है कि ये बैन अब हटा देना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर उत्पादन अच्छा है तो सरकार को इसको बैन को हटाना चाहिए और इसको एक वेरी फ्यूचरिस्टिक इसमें एक सोच होनी चाहिए कि ये मार्केट जो है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर ये इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल हो तो इसमें किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। किसान भी जानेगा कि हमारे आगे जो हमारी जो क्रॉप है उसके क्या प्राइसेस हैं और इस हिसाब से वो भी प्लान कर सकते हैं कि हमारे हमको कौन सा उत्पादन करना चाहिए। तो इसके जो फायदे हैं वो डेफिनेटली जरूर है, लेकिन इसमें भी काफी इंटरवेंशन है, तो इसमें भी एक लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपका है। और अब चूंकि बहुत सारे सवाल भी आए हैं तो अपने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सवाल अब लेते हैं। एक सवाल है ब्रजेश पांडा का और वो पूछ रहे हैं कि क्या इज द इंपोर्ट ऑफ चना एक्चुअली 3 लाख मीट्रिक टन? इसका जवाब क्या होगा कोठारी जी?
देखिए मेरे ख्याल से ये 3 लाख टन चने का जो एस्टिमेट जिन्होंने दिया है, इसमें कुछ चना हमारे यहाँ पिछले साल तंजानिया और इथोपिया से कुछ चना आया है, और कुछ इसमें मेरे ख्याल से इसमें कुछ काबुली चना भी इसमें इंक्लूड है। तो इससे मिला के शायद ये जो आंकड़े आए हैं उसको मिला के 3 लाख टन है, क्योंकि चने का जो मेन उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से लाके हमारे यहाँ से जो कस्टम ड्यूटी है वो 66% है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना फिजिबल नहीं है। लेकिन तंजानिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से ये इसलिए पॉसिबल है कि वो हमारे एलडीसी कंट्री होने की वजह से वहां से ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए वहां से चना हमारे यहाँ काफी मात्रा में आता है। तो 3 लाख का आंकड़ा मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि सही है, लेकिन हाँ लगभग अच्छी क्वांटिटी का इंपोर्ट हुआ है, जिसमें काबुली चना भी इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। एक सवाल ये है सरोजा मैम आपके लिए कि जबकि यूपी में इस तरह से बिजाई बढ़ रही है लेंटिल की और अभी तक कोई क्रॉप डैमेज की खबर नहीं आई है, तो क्या रीजन है कि दाम 7,000 से 7,800 के रेंज में घूम रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो फाइनल जो हमारा प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो पिछले साल के आसपास ही आ रहा है, थोड़ा सा 5-7% ज्यादा का हमने अनुमान दिया है। तो उस लिए वो स्टॉक पोजीशन फिर भी टाइट ही रहेगा, तो यही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है। एक सवाल आपके लिए और है सरोजा जी, एनके है मिस्टर एनके, और वो पूछ रहे हैं कि इस बार तुअर का प्रोडक्शन कितना होगा, क्या एस्टिमेट है, क्या कहेंगे आप? तुअर का मैं लिख के तो नहीं रखा मैंने, पर पिछले साल के आसपास ही हम बता रहे हैं। वो पहले हमने सोचा था कि ज्यादा आएगा, लेकिन एंड ऑफ सितंबर नवंबर में जब बिटवीन सितंबर नवंबर आल्सो द वेदर हैड सर्टेन एबरेशंस, तो उससे थोड़ा सा कर्नाटका में हमने यील्ड कम देखा, तो उससे मेरे ख्याल से वो आई थिंक इट वेंट बैक टू 37 और समथिंग आवर एस्टिमेट। ओके, ठीक है। एक सवाल विमल जी आपके लिए है सर, और ये सवाल ये है कि अगर दाम बढ़ते हैं, अब इस सज्जन ने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अगर दाम बढ़ते हैं तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए पल्सेस के दाम जब बढ़ते हैं? देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है। कल सीएसीपी की जो मीटिंग हुई थी, हमने सरकार का कि जो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि सरकार को एमएसपी पर दालों का ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। आज वीट की हम बात करें या राइस की बात करें, पेडी की बात करें, तो सरकार का जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है बहुत बड़ा है। तो अगर सरकार उसी तरह दालों में भी उत्पादन जो होता है उसको एमएसपी भी खरीदे, और जब बाजार में दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको वो मार्केट इंटरवेंशन करें, न कि व्यापारियों को हैरेस किया जाए। व्यापारियों को, ये बात हमने कल सीएसीपी को कही है बात, न कि व्यापारियों को हैरेस किया जाए, न कि उन पे रेड की जाए, न कि आप स्टॉक लिमिट लगाएं। ये बहुत पुराने मेजर्स हैं, दीज आर नॉट द साइंटिफिक सिस्टम, दिस इज नॉट द साइंटिफिक वे टू कंट्रोल द प्राइसेस। आपके पास एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि ये सिचुएशन बाहर देखिए, ये सिचुएशन एग्जैक्टली आगे भी पैदा होने वाली है ये, क्योंकि ये देखिए हमारे क्रॉप्स है और ये वेदर रिलेटेड है, ये सिचुएशन बार बार पैदा हो सकती है। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज दाम बढ़ गए तो कल आपने ट्रेडर्स में रेड करना शुरू कर दिया, आपने स्टॉक लिमिट लगा दी। दीज आर वेरी short lived measures and this should not be taken up by the government. गवर्नमेंट को एक लंबा सोचना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, और ये नहीं कि 10-20% दाम बढ़ गए एमएसपी से और आपने इस पे आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए और उसका तरीका कि आप प्रोक्योरमेंट करिए, आप पल्सेस को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डालिए। हमने सरकार को बार बार हम आग्रह कर रहे हैं, कल सीएसीपी की मीटिंग में भी हमने कहा कि आप जो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन की जो कमी की जो बात अभी हम कर रहे थे इसी वेबिनार में, तो हमारे उस इशू को भी, हमारी जो आज एक मासेज जो पॉपुलेशन है जो बीपीएल में रहती है या पॉवर्टी लाइन पे रहती है, उनकी जो मेल न्यूट्रिशन की जो उनका जो इशू है, आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ही उसको आप मीट कर सकते हैं। तो उससे एक तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेज है वो बराबर बनती रहे, लगातार बनी रहेगी। आप जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर रहे हैं, मार्केट में आप इंटरवेंशन तभी कर रहे हैं कि जब बाजार के अंदर में बहुत ज्यादा उसकी शॉर्टेज है या बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। अभी तो क्या हो रहा है मृत्युंजय जी,
बस सरकार दालें खरीदती है, यहाँ पे एमएसपी से नीचे बिक रहा है तो भी सरकार बेच रही है, तो वो पॉलिसी सही नहीं है। वो आपने मार्केट में ऑफलोड करने के किस समय आपको ऑफलोड करना चाहिए? मार्केट जब इंटरवेंशन आप तब करेंगे जब दामों के दाम एमएसपी से 25-30% ऊपर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पॉलिसी तो पक्के तौर पर सरकार को देखना चाहिए, इसमें कैसे बदलाव हो सकता है। सरोजा जी, आपके लिए क्वेश्चन मैम ये है कि देयर आर सम रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट tour production from Karnataka and Maharashtra will be lower this year. Do you see any price pressure going forward? What's your take, ma'am? We think that it will stay in range. There won't be too much pressure on it. But the market was expecting a crop size of 40, and the crop size is now turning out to be closer to 37, according to our estimates. So this is same as last year, as I just mentioned. And therefore, depending on availabilities and stuff like that, the prices will remain in range and closer to, the next year's sowing prices. I mean, next year's harvest price may start to go up depending on stocks available again. Okay, fine. But tight to rahega. Tight rahega, right. Dr. Sevak, this question is for you, sir. The question is, do we have any equipment or sampling method to check the quality of pulses after harvest? What's your comment? Pardon, sir. Your voice is not clear at that time. I repeat, do we have any equipment or sampling method to check the quality of pulses after harvest? No, sir. We don't have any method, just like now. Okay, we don't have. Okay, right, sir. कोठारी जी, आपके लिए क्वेश्चन आया है. Do you expect to increase the time for free OGL for pulses after 30th June 2020? This is only the government of India can reply to this because I am not the competent authority. So they are the only one. But it all depends on our supply. And I really don't think because you see already we have a quota system. So from 1st April we have a quota of almost 6 lakh for 4 to 1 and 50. About 7,50,000 tons of tour quota would be available for the next financial year beginning from 1st April. So when 7,50,000 ton quota is available, for which you don't require to do bring the pulses, bring tour under OGL, the world, even if we go to the international market, we won't get 7,50,000 tons of tour either from the East Africa or from Myanmar. Putting all together, we won't get even 7,50,000 tons. So Okay. it's as good as OGL, number one. Right. Number two, in Udad, as far as Udad is concerned, yes, Udad, we are going to see a good crop from Myanmar. Already till 31st March, this is allowed. And I think a good quantity is going to come. And then all depends on our Kharif crop, whether we really require more Udad or not. Okay, fine. Yeah. Dr. Sevak, if you can answer this question, any deficit of sowing replaced by which crops? What's your view? What, sir? Any deficit of sowing replaced by which crops? Deficit? Yeah. Deficit of pulses sowing. Which kind of deficit? Sowing deficit. Sowing deficit? Yeah. So we don't have data for this now, but we are actually looking after the research part. Okay, okay. Yeah, research part. So we don't have any data about the sowing deficit at the moment. We are depending upon the other agencies for such type of data. Yes. We are not collecting such data. No issue, sir. Fine, fine. Yeah. Saroja, ma'am, this question is for you, ma'am. Question is, we have MSP for farmers. What about consumers? Can government define the expensive price? How it should be controlled? Okay, can you answer, Mr. Kothari? Can you repeat again?
Can you repeat the question? Question is, we have MSP for farmers, but what about consumers? Can government define the expensive price and how it should be controlled? Sorry, I could not get your question. Can you please repeat again? Mrityunjay ji, can you hear me? The question is, MSP for farmers, but what about consumers? Can government define the expensive price? Yes, definitely. Government cannot specify the price for the consumers, but they are keeping. We have seen this last year. What has happened when the prices even didn't go up and they were expected to go up? Government has come into action, and they keep on taking the swift measures. As I just explained, that the government they will go for the storage control system and stock limits, and then they will raid the traders, and all these kind of things are happening. But as we suggested, that for the long-term policy, for the market intervention, to look after the interest of the consumers, there must be a procurement at minimum support price. Government must create a buffer stock so that market intervention is there. And as everybody is concerned about the, we know that we are not only, we have to look at the side of the consumers also. Their interest must be protected, because that is what we urged the CACP yesterday, that every time you do not link the production to the increase of MSP, you should ensure that the productivity is increased. You do the procurement, you ensure the security of the farmers, that the government is going to purchase the crops. So the farmer will, grow more and more crops. And once the availability is ensured, once the supply is ensured, I'm sure the prices will remain stable. Right, sir. Right. Thank you very much, Mr. Kothari, Mr. Bheda, Dr. Sevak, and Mr. Desai, Mrs. Saroja, for joining us. Now over to you, Sonia. Thank you so much, Mrityunjay, for a very insightful panel discussion, and thank you to our speakers for very insightful presentations. We have a lot of questions still in the question chat box. What I would suggest is we will answer them. We will take them with the speakers post the webinar. If there is any further you would like to reach out to us, please mail us on info@ipga.co.in. Also, the webinar link and the presentations will be available on our website tomorrow onwards. You can also download it from there. And the people who have specifically asked for the emails, we will of course reach out to you and email the presentations and the webinar link. I would like to thank all our panelists, our advertisers who have supported us to put together this presentation. Our, of course, delegates, members who have been attending, the IPGA core committee and management committee members. Last but not the least, Mrityunjay, thank you so much for moderating this session for us. I think you have really made it very interesting for our delegates. Also, I would like to thank our agencies, Hung Golden and Media and ICE Global, for putting this webinar very successfully. We were, of course, hoping to have a presentation and message from Mr. Rohit Kumar Singh and Dr. S.K. Malhotra, but we all know we are very close to the budget, so they are very busy in parliamentary meetings and sessions with the ministers. So unfortunately, we could not hear them, but very shortly on our World Pulses Day seminar, we will have them with us. So look forward to more updates on the same. I wholeheartedly thank you for your support, and look forward to seeing you on the 10th of Feb. Thank you very much. Have a good evening ahead.